Welcome to Top Maths. Maths is easy. It just needs practice. Practice and practice. Question number 5. Find the number of shares received when rupees 60,000 was invested in the shares of face value rupees 100 and market value of rupees 120. Face value 100 rupees, market value 120, amount invested is 60,000. Now tell me, when you buy shares, right? You are buying at face value or at market value? At market value, right? So, number of shares. They asked you to find out how many shares have bought. We will say number of shares is equals to sum invested divided by market value of one share. Correct? So sum invested in this case is 60,000. Market value of one share is 120. So 1010 will get cancelled. Divide करेंगे 12 5s are 60 and 2 zeros will give me 500. So my final answer is 500. Correct? तो आप आंसर क्या लिखोगे? क्या आपको पूछा था? Find the number of shares received. So I'll write number of shares received is equals to 500. ये आ गया मेरा आंसर. बहुत ही इजी है, अच्छी तरीके से करो. बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू. Now question number 6. Srimati Meeta Agarwal invested rupees 10,200 when market value of share is rupees 100. She sold 60 shares when market value was rupees 125 and sold remaining shares when the market value was rupees 90. She paid 0.1% brokerage for each trading. Find whether she made profit or loss and by how much. Now this example is again a sort of big example, so you have to make it in groups. Okay. So first, investment amount is 10,200. Market value of one share is 100. So how many shares she has purchased? Let's find it out. So I'll say number of shares bought. How many shares she bought? 10,200 is the investment amount divided by market value of one share, 100. Correct? So two zeros will get cancelled. 102 shares. मीता अग्रवाल ने कितने शेयर्स का परचेस किया? 102 शेयर्स परचेस किए. Okay. She paid 0.1% brokerage on this. So I'll say brokerage. What is the amount of brokerage? शेयर का इन्वेस्टमेंट वैल्यू है 10,200. 0.1% is a brokerage. So 0.1 upon 100 multiplied by 10,200. Two zeros will get cancelled. 0.1 into 10.2, 102 is 10.2. That is 10 rupees 20 paisa is a brokerage, right? So total investment value. Total investment value 10,200 rupees plus brokerage 10 rupees 20 paisa. तो टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू कितनी हो गई? 10,210 rupees 20 paisa. This is total investment value. We'll call it as statement number 1. Okay, इतना अमाउंट का इन्वेस्टमेंट हो गया. आफ्टर गिविंग ब्रोकरेज ऑल्सो is 10,210 rupees 20 paisa. इतना उसने इन्वेस्टमेंट किया. ओके. नाउ शी सोल्ड शेयर्स. कितने शेयर्स सेल किए? शी सोल्ड 60 shares when market value was rupees 125.
60 shares sold at market value rupees 125. करेक्ट. तो कितना अमाउंट का सेलिंग हो गया? तो अमाउंट 60 multiplied by market value of one share, right? So we'll keep 10 as it is. 6 5s are 30, carries 3. 6 2s are 12 plus 3 15, carries 1. 6 1s are 6 plus 1 7. 7,500 rupees का actual selling हो गया, right? Remaining shares she sold at a market value of rupees 90, correct? But how many shares remain? टोटल शेयर्स कितने परचेस किए थे? 102. आउट ऑफ 102 शी हैज सोल्ड 60 शेयर्स. तो बाकी कितने रहे? माइनस करना पड़ेगा ना. 42 शेयर. वैसे रिमेनिंग शेयर्स इज 102 वॉज अ शेयर्स परचेस माइनस 60 शेयर सेल हो गए. तो कितने शेयर्स बाकी रह गए? 42. करेक्ट. तो दिस 42 शेयर्स sold at market value is 90. It is given. करेक्ट. तो 90 रुपीज को एक ऐसे अगर 42 शेयर सेल किए तो कितना अमाउंट मिलेगा उसको, वो फाइंड आउट करेंगे. दैट इज ऑल्सो अमाउंट 90 रुपीज का एक शेयर. ऐसे कितने शेयर्स? 42 शेयर्स. लेट्स कीप 10. 9 2s are 18, carries 1. 9 4s are 36 plus 1 37. 3,780 रुपीज. करेक्ट. तो 60 शेयर्स बेच के उसको मिले 7,500 रुपीज. 42 शेयर्स का सेलिंग किया तो उसको मिले 3,780. तो व्हाट इज द टोटल अमाउंट शी गॉट आफ्टर सेलिंग शेयर्स? तो टोटल अमाउंट is 7,500 plus 3,780. 0, 8 and 0 is 8, 7 and 5 12, carries 1. 10 plus 1 11. 11,280 rupees she got after selling 102 shares. बट उसको क्या देना पड़ेगा? ब्रोकरेज, राइट. तो ब्रोकरेज देना पड़ेगा. तो मैं जाता हूं अगले पेज पे, राइट. ब्रोकरेज कितना है? ब्रोकरेज 0.1% मीन्स 0.1 अपॉन 100 ऑन व्हाट? कितना अमाउंट का सेल किया, राइट. सेल कितने अमाउंट का किया है? देखिए 11,280 रुपीज का मल्टीप्लाइड बाय 11,280. तो 1 अपॉन 1,000 करूंगा मैं यहाँ पे, मल्टीप्लाइड बाय 11,280. 10 10 will get cancelled. So 1128 upon 100 is 11 rupees 28 paisa. This is a brokerage, right? So total amount received after selling 102 shares. सारे के सारे शेयर्स बेचने के बाद उसको कितना पैसा हाथ में आएगा? तो उसने 11,280 रुपीज का सेलिंग किया था, जो कि हमने यहाँ पे देखा, राइट. उसके बाद में उसने ब्रोकरेज पे किया 11 रुपीज 20 पैसा. ब्रोकरेज क्या हो जाएगा यहाँ पे? माइनस हो जाएगा, राइट. तो कितना हाथ में आया देखिए, 11,280 माइनस 11 रुपीज 28 पैसा, राइट. 10 minus 8 is 2. 9 minus 2 is 7. 9 minus 1 is 8. 7 minus 1 is 6. Then 2. 1. 1. That is 11,268 rupees 72 paisa. This much
अमाउंट उसको मिलेगा, राइट? This is statement number 2. Understood this? Now, let's find out what is her investment amount. स्टेटमेंट नंबर 1 पे लिखा था हमने, क्या है? 10,210 रुपीज 20 पैसा. 10,210.20. Correct? What is amount received? Statement number 2. 11,268.72. मुझे आप बोलिए प्रॉफिट हुआ के लॉस? प्रॉफिट है ना. 10,210 रुपीज इन्वेस्ट किया और 11,268 रुपीज मिल गया. दैट मीन्स शी गॉट प्रॉफिट. सो विल राइट फर्स्ट स्मिता अग्रवाल, श्रीमती मीता अग्रवाल, सॉरी मीता अग्रवाल गॉट प्रॉफिट. पहला क्वेश्चन था फाइंड वेदर शी इनकर्ड प्रॉफिट और लॉस. तो शी इनकर्ड प्रॉफिट. ओके, बाय हाउ मच? तो प्रॉफिट is equals to 11,268.72 minus 10,210.20. सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा. 2 minus 0 2, 7 minus 2 5, then 6 minus 0 8 minus 0 is 8, 6 minus 1 is 5, then 2 minus 2 is 0, 1 minus 0 is 1, and 1 minus 1 is 0. 1058.52. This is the amount of profit she got. Understood? देखिए एक बार फिर से चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ. नंबर ऑफ शेयर्स कितने परचेज किए ये पहले फाइंड आउट किया हमने. तो टोटल अमाउंट इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर. कितने अमाउंट के कितने शेयर्स परचेज किए? 102. नाउ on 10,200 rupees brokerage of 0.1% was given. तो ब्रोकरेज फाइंड आउट किया, कितना हुआ? 10 रुपीज 20 पैसा. करेक्ट. तो ब्रोकरेज ऐड हो जाएगा, राइट? तो टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू कितनी हुई? 10,210 रुपीज 20 पैसा. दिस इज आवर स्टेटमेंट नंबर 1. नाउ आउट ऑफ 102 फर्स्ट शी सोल्ड 60 शेयर्स एट मार्केट वैल्यू 125 रुपीज. तो हो गया अमाउंट 7,500. नाउ आउट ऑफ 102 60 शेयर्स तो सेल हो गए. तो कितने बाकी रह गए? 42 शेयर्स बाकी रहे. तो 42 शेयर्स सेल किया एट अ मार्केट वैल्यू रुपीज 90. तो 90 मार्केट वैल्यू से कितना अमाउंट आ गया हाथ में? 3780 रुपीज. सो टोटल अमाउंट इज 11,280 रुपीज का उसको सेलिंग मिला. करेक्ट. बट शी हैज टू पे ब्रोकरेज. तो ब्रोकरेज 0.1% से कितना दिया? 11.28 रुपीज. वो जब सब्ट्रैक्ट किया तो कितना एक्चुअल पैसा शी रिसीव्ड? 11,268.72. दिस इज आवर स्टेटमेंट नंबर 2. नाउ हमने दोनों लिखा यहाँ पे. तो हमारे समझ में क्या आ गया कि अमाउंट रिसीव्ड इज मोर देन द अमाउंट इन्वेस्टेड. दैट मीन्स शी इनकर्ड प्रॉफिट. तो वी राइट मीता अग्रवाल गॉट प्रॉफिट. प्रॉफिट मिला है तो कितना प्रॉफिट मिला? तो इन दोनों का क्या करना पड़ा? सब्ट्रैक्शन. सब्ट्रैक्शन करने के बाद मेरे पास कितनी वैल्यू आ गई? 1058.52 रुपीज. इतना उसको क्या मिल गया? प्रॉफिट मिल गया. कंसेप्ट इज क्लियर? ओके. एग्जाम्पल क्या करना है आपको? इस तरह से उसका फ्लो चार्ट समझ में आना चाहिए. एंड इट रिक्वायर्स प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस. ओके. So best of luck and thank you. Now let's learn example number 7. Market value of shares and dividend declared by two companies is given below. Face value is same and it is rupees 100 for both the shares. Investment in which company is more profitable? There are two companies. Company A, in which market value is 132, dividend is 12%.
Company B, market value is 144, dividend is 16%. Okay, let's see how to do it. First, face value of company is 100 and dividend are given. So let's find out what is the dividend for company A. First, I am going to talk about only company A. So, company A, dividend. How much percent is the dividend? It is 12%. So 12 upon 100 on face value 100 rupees. Face value is 100, right? So how much rupees it is? Rupees 12. So in company A, we are getting a dividend of 12 rupees per share. So what is rate of return on investment? Rate of return on investment. What is formula for rate of return on investment? Formula is dividend divided by sum invested multiplied by 100. So dividend is 12. Sum invested. For company A, if we buy one share, we have to buy at a market value of rupees 132. So that is my investment. So it is upon 132 is the sum investment multiplied by 100. Correct? Can you divide by 4? 4 3s are 12. 4 3s are 12, carries 1, 12 again, 4 3s are 12. Correct? We can again divide by 3. 3 1s are 3, 11 3s are 33. So what to get? The answer we get? It is 100 upon 11. Divide by 11. 11 9s are 99. Carries 1, 10 हो गया. We cannot divide. Again 10 का हो गया. Now 100. 11 9s are. So this is 9.09%. Correct? So if we invest in company A, the rate of return on investment is how much? 9.09%. Okay. Now let's talk about company B. Company B, we are getting dividend of 16%. So I'll write for company B, dividend is 16% on face value rupees 100 again. So again it is rupees 16 per share. Correct? So here we'll find out again rate of return on investment. Because we need to find in which company investment is more profitable. So rate of return जिसमें ज्यादा होगा उसमें investment profitable, right? So rate of return on investment in company B. Again formula is same, dividend upon sum invested multiplied by 100. Dividend is 16. Sum invested. कितना अमाउंट है मार्केट वैल्यू 144. So upon 144 multiplied by 100. 16 9s are 144. So 100 upon 9. डिवीजन करो कितना आएगा. 9 1s are 9, carries 1, 10 हो गया. Again 9 1s are 9, carries 1. So it is 11.11%. Okay. अभी आप ही देखिए. In company A, if you invest, you will get 9.09% as return on investment. In company B, you will get 11.11% as return on investment. So, company B is more profitable. Correct. So, what is my answer? Investment in company B is more profitable. समझ में आ रहा है? है ना इजी? अच्छी तरीके से करना है. बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू. Question number 8. Shri Aditya Sanghvi invested rupees 50,118 in shares of face value rupees 100 when the market value is rupees 50.
rate of brokerage is 0.2% and rate of GST on brokerage is 18%. And then how many shares were purchased for rupees 50,118? Now here, market value is 50 rupees. Brokerage is always calculated on market value, correct? So we'll find out the brokerage. Brokerage 0.2% means 0.2 upon 100 multiplied by market value is 50, right? So 50 ones are 50, 50 to the 100, 0.2 upon 2 is 0.1 rupees, correct? This is the brokerage he required, correct? Now GST is calculated on brokerage. So GST is equals to 18% means 18 upon 100 multiplied by 0.1. See how I'm going to do it. 18 upon 100 multiplied by 1 upon 10. ऐसा करूंगा मैं. So 18 ones are 18 upon 1000. 18 upon 1000 means what? After decimal, 3 numbers, so 018 rupees. देखिए कैलकुलेशन इजी है, लेकिन कुछ कुछ लोगों को है ना इसमें थोड़ी दिक्कत आती है, इसके लिए बराबर से समझाना पड़ता है. ओके, तो दिस इज 0.018. नाउ ब्रोकरेज इज 0.1 means 0. We can say 10. 0.018 is a GST. So how much is the total amount he required to buy one share? So I'll say amount required to buy one share is equals to market value 50 rupees plus brokerage 0.1 plus GST 0.018. करेक्ट. तीनों का क्या करना पड़ेगा? एडिशन करना पड़ेगा, राइट? तो 50 plus 0.1 0.018 811 50.118 rupees. 50.118 rupees. This is the price of one share, correct? How many shares what is his investment? 50,118 rupees. Therefore, I will say number of shares purchased. Number of shares purchased is equals to total amount invested is 50,118 divided by 50.118, correct? If I remove this decimal, if I make it 50,118, I have to multiply it by 1000 on the numerator because after decimal there are 3 numbers और यहाँ पे और एक है 50,118. Simply this is getting cancelled. So how many shares? 1000 shares. This is our final answer. आ रहा है कंसेप्ट समझ में? आपको ये सिर्फ कैलकुलेशन छोटा छोटा है ना, ये परफेक्ट आना चाहिए. ओके, इजी है? यस. सो बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू. Thank you for watching Top Maths.